हेलो एंड वेलकम टू ब्रेनchow रिएक्शंस। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में ये विलेज और ये वीडियो है ट्रैवल लाइट की तरफ से। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर टू सपोर्ट हर। यस और लेट्स चेक इट आउट। यस, हमने अभी तक एक ही वीडियो देखा है ट्रैवल लाइट का, बट वो वीडियो काफ़ी अच्छा था, सो वी कैन रेकमेंड हर चैनल। लेकिन देखते ही ये वीडियो कैसा होता। You know, I have this memory from when I was a kid. There was this forest out behind my house. I would spend hours and hours there. It was the most beautiful place in the world. Seriously beautiful. That's how I feel here. Gosh, right now we are driving through these tiny little roads going higher and higher up into the mountains, and there is such beautiful lush farmyards out here and orchards, so many trees and bordered in mountains. This is so beautiful. Where are we going now? What is the village called? Where? Hopar? Yeah, Hopar village. These views are so beautiful. We're going higher and higher. There's no guardrails anywhere. क्या कॉन्ट्रास्ट है ना। रोड इज सो डेंजरस। वही बोल रही थी ना, गार्ड रेल्स भी नहीं है। मुझे तो जहाँ गार्ड रेल्स होता है उधर भी टेंशन होता है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। स्मॉल फार्म्स भी like a storm I'll rage that night in the dark I can't वैसा विलेज में रहना चाहेगी। कुछ दिनों के On लिए this day yes. in northern Pakistan, we were on our way to a tourist area nearby. And now I should introduce Akil. Akil was our driver in northern Pakistan, and Munim and I quickly started calling him the race car driver because he loves driving fast. Akil also loves music and hopes to be a singer one day. As we were en route, Akil asked if we would want to visit his hometown instead, a tiny village high in the mountains. Of course we did. ये तो crazy। I cannot believe कि ऐसा ट्रिप, मतलब चेरी ब्लॉसम है क्या वो जो कैलेंडर के फोटोज नहीं देखे। This is extremely beautiful. Oh my gosh, guys, I have come to a fairy tale right now. I feel like I am in a movie set, like The Shire or something. This is where people actually live. It's like an enchanted fairy tale glen. So I am in a village right now called Hopar village. We had to drive very far up into the mountains to get here, and the views of this place, oh my gosh, they are, to call them beautiful is inadequate. They're just so amazing and stunning. This whole place is just full of these beautifully made rock walls and flowering trees and grass and moss, and bordered by these massive snowy mountains. This is actually very close to a glacier. It's the only place in the world where the people live above the glacier, and then there's a glacier down below. Crazy. रहना कैसा रहेगा? हाउसेस भी ब्यूटीफुल है ना। मैंने अभी नोटिस किया पाकिस्तानी फ्लैग को। Beautiful shot actually. Walking around here with Munim, and Akil Hussain. he is from this area, so he's showing me around. Were you born here or close by? क्या बोल रही है? आप यहाँ पैदा हुए थे?
Yes, You were born here. yeah. Oh. But now we are living Gilgit. So this is one of the small pens where they keep their animals. It's built of stone. It is actually so lovely. And there are, I think, the cutest calves that I've ever seen in my life here. Hi. You want to take cow? Is there a cow in here? Yeah. Mother cow. What? Okay, there's more cows in here. Oh. काओ समझ Hi. कर रहा है? काओ समझ कर रहा है? काऊ क्या? आवाज कर रहा है? हाँ ऑब्वियसली कोई ह्यूमन क्यों करेगा? बस मेरे जैसा बेवकूफ कोई अराउंड रहेगा तो मैं ऐसा आवाज कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल ना काओ। Quiet on the waterline reminds me of our ब्यूटीफुल दिख रहा है तो। I realized कि I cannot be here for a very long time. मुझे डर लगता है सब animals से. talking for a memory This is hard to believe a good looking place. ये देखना क्या है ये? skipping stone. और ऊपर ट्री पे क्या है? No idea. कुछ बड़ा nest nest. कुछ है, हाँ. Everything looks good. उधर clothes hang किए होंगे बैठ अच्छा है। Yes. Usually पूरा look को kill कर देता है हाँ. सब कुछ। Clothes का जो line है उस पे hang किया हुआ था सुखाने के लिए। Everything is weird and fairy tale जैसा बोला इसने। Yes. और मैं इतना जोश में आ गया कि Blossoming ईयरफोन ही निकल trees. गया। Their apricot trees actually are just everywhere. Oh my gosh, this is beautiful. Look at that. I have just heard the most interesting fact about here. So the people's areas don't have any boundaries or fences. It's just open to anyone. So actually, in all of history, this area has never had a thief come here. So they don't need any such thing as locks or fences breaking off their lands. And that is Interesting. just, I mean, what kind of world am I in right now? Look at this enchanting scenery behind me. They're drying their clothes up here with this amazing view of the village. This is where they are storing wood for the winter. We just saw some women that were collecting the wood. It's a grove of magic. देखना वो कितना I'm खुश so है सच्ची happy. में। This place I'm is, so happy. I don't know, it reminds me of maybe what you'd expect to see in super scenic Japan when all of the cherry blossoms, the sakura blossoms are happening, or Switzerland, or Lord of the Rings. Oh my gosh, like where even am I right now? This is like a place that you think doesn't exist. Hi, I am here with, what is your name? Sakawat. My name is Sakawat. Ma'am, how is your trip? How is Gilgit-Baltistan people is going? I love it. It's so beautiful here. Beautiful scenery, and everyone is so welcoming and nice and friendly here. That's like one of my favorite things, and I love having chai with everybody. It's great. Chai is special this year. Yeah. Yeah. Where are you from? I'm from Gilgit, Nagar, Pakistan. Okay. There are some very rare animals that are in this area of Hunza Valley, and that would be, two of them would be the snow leopard and the margor, which we call the ibex. It's a really big goat with these spiraling horns, and they actually kill snakes. They're very fierce, and these animals are being protected because they are rare. There's not so many of them left in the world, and they exist in this area. So if there's ever a time when the margor comes and is eating the fruit off of the trees in this village, or say a snow leopard comes and attacks one of their animals, then they are not allowed to stop the leopard or the margor. They just let it eat or let it I guess take their animals, and then they report that to the government, and the government will refund them the money for the loss of the animal. But that's just to keep the rare leopards and margors safe. Oh my gosh, having chai right now. Thank you. Welcome.
Thank you so much. पाकिस्तान में हर जगह लोग बहुत ही टूरिस्ट लोग को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। Well, at least हमने जितना देखा है उसके हिसाब से। I am at a local house right now. They have invited me inside, and this is their kitchen. Actually, they originally had an older house, but it was damaged in a flood, so they have now recently moved here. Are you guys okay to be on the camera? Okay. You want to say hi? Want to say hi? Hi. 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 Good to meet you. Hi. Hi. ये वीडियो कुछ You अलग ही all नहीं live है in such a beautiful place. अरे आप बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं। क्या फोटो शूट्स के लिए शिरीन हयातार मते खुश सरे संजान मासो सार दिबो योरो सार रोश सरे संजान ड्रोन के वजह से शिरीन हयातार मते खुश सरे संजान मासो सार दिबो योरो सार रोश सरे संजान आरदियो बती हाय हाय आरदियो बती तलब गाता है गछान हर दी हम मुश्तान आशिक बेचाता है गछान Mountains behind us. Oh, wow. I think this must be one of the most beautiful, peaceful, charming fairy tale places I have ever seen. Okay, been exploring the village. Now guess what time it is? Can you guess? Of course. Tea time. More chai. Okay, have left the village now and we are driving again through the most beautiful scenery, and Akil wants to sing me a local song. So first of all, welcome to Nagar, Thank and you. I will sing a song special for you. After my song, the boss translated you what I want to sing for you. Okay. गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो नमो छुपा के जियो हाय न सर झुका ट्रांसलेटर इस वर्ड की कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। लकीली हमें समझ में आ गया। गड्ढा में छुप के सितारे बना नहीं होते हर के पल की खुशी को गले लगा के जियो नमो छुपा के जियो हाय न सर झुका के जियो in my song advice and prayer also mentioned for you. Okay, Oh, thank you. Okay. So good. enough. Thank you. You have such a good voice. Come on, translator explain करके दिखाए। After Akil sang his song, Munim translated the lyrics for me. Some of them went like this. Even in times of sorrow, don't forget to live. You don't know which moment is the last moment of your life. Don't forget to live. Okay, from the village, have now come to Altit Fort, and it has a lovely walkway into the fort here that's all green with so many trees. And so there's actually two forts, and the lower one is called Altit, the higher one is called Baltit, and both forts were inhabited by royalty. This fort
is so cool inside. So this was built 1100 years ago. It is the oldest monument of the Gilgit area, and right now I'm standing in what used to be a guard tower. So the Silk Road and the river is right in front of me out of these windows here, and this fort was used to guard against anyone that was going along the Silk Road because so many people were passing back and forth at this time, so there needed to be a fort here. And this is also where the kings lived. There's a fort above it that is 800 years old. This is so cool in here. And wandering through all of these little passageways and doors. पाकिस्तान में बहुत सारे ओल्ड सिविलाइजेशंस थे, मतलब जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। Kind of scary. Behind me right now, this is where 600 years ago one of the kings buried his own brother alive inside because the brother had started a rebellion and was challenging his power as king. Who is that? Not very ancient. He did this because the brother had started a rebellion and was challenging his power as the king. The human skeleton is still inside right now, and it was only discovered recently when they were scanning it. So all of the doors in this fort are quite short. This is the door right here, and I'm not tall. And so my guide was just telling me that the people in ancient times were actually quite tall in this fort. So they didn't make it because they were short. They made it because, first of all, you had to, you know, bow your head to go in, which is a sign of respect, but also if invaders were to come into the fort, then their heads could easily be chopped off. So. Up this stairwell to this view of the village below and all of the fields and the mountains. Oh my gosh, look at this. Behind me right here is Hansa's first ever mosque. It was built about 500 years ago because with the arrival of the Silk Road and so many traders coming through, Islam was introduced to the area. So inside here is the very first mosque. Fort, there was an intense selection process for who would be courageous and brave enough to enter this fort's army and join their forces. So if you see these two rocks right here, the test would be that someone would have to jump from that rock to this steep rock. Look where it goes. They would have to jump onto that rock and then jump all the way back. And if they were brave enough to do it and survived, of course, then they would be entered into the army. That is crazy. This rock is so steep. I hope I can show you on the video. शायद जंप कर पाता उतना दूर, पता नहीं, मतलब इधर से ऐसा पॉसिबल लग रहा है, लेकिन इतना हिम्मत तो नहीं। हम लोग को अपने लाइफ से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, मतलब रिस्क भी लेंगे इतना बड़ा। I wouldn't even go there. Okay, leaving the fort now. How epic is this place, guys? And look at the views of the river. Oh my god. Such amazing stories here. So thank you so much to my guide. What a cool place. I'm so glad that I came here. You know, when you travel, sometimes you think, oh, I've seen so many forts, I've seen so many, whatever, temples, cathedrals. So you think maybe I should skip it, but places like this, I'm just really glad that I didn't. Thank you so much. Welcome. I loved it. You know so many interesting stories about this place. Thank you for your encouragement. Bye. Goodbye. Thank you. इतनी मोरी आत्मा तूने
विलेरने विले तो चिकमया मजा हाय हाय चिकमया मजा तुम्हें खिंगिरने विले तो इतनी मोरिया द्वान तुम्हें वीडियो इतना कैप्चर कर भी पाता We're रहे. back. Oh my gosh, so fast. Off to this place called Eagle's Nest right now. And again, we are driving through the most beautiful villages with all these flower trees, and there's mountains and stone, and it's a good thing that he is a good driver because in a lot of these places there's no guardrail, and we're so high up right now. Where are we going? What is this, heaven? इमेजिन कर चाय पीना ऐसा कुछ है लोकेशन में. Imagine getting married at some place like this. This was a great video actually. Yeah. And it was actually almost 21 minutes का. And बिल्कुल लगा ही नहीं कि 21 minutes निकल गया. Almost वीडियो के पूरे ड्यूरेशन में I was surprised by the beauty. मतलब इतना ब्यूटीफुल लोकेशन. एंड ऑब्वियसली हमें भूलना नहीं चाहिए कि हिस्टोरिकल प्लेसेस भी दिखाए. Yes. ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इन दैट रीजन जो 1100 years पहले बना था, गार्ड पोस्ट था, और उसका भी अजीब सा हिस्ट्री था. जिंदा गाड़ दिया था इसको अपने ब्रदर को क्योंकि चैलेंज कर रहा था इसलिए. सो या पहले एंशिएंट टाइम्स में कितना क्रेजी फाइट्स होता था फैमिलीज के बीच में. एंड हम लोग आज कहते हैं कि हम लोग इनह्यूमन बनते जा रहे हैं. बट पहले से ही ह्यूमंस काफ़ी टाइम से इनह्यूमन रहे हैं. Yeah. बट ओवरऑल होप करते हैं कि एक्चुअली कभी ह्यूमंस पीस की तरफ चले जाएंगे. Yes. और ये अजीब अजीब फाइट्स मतलब ह्यूमन लाइफ से ऊपर नहीं होना चाहिए कभी. Correct. ह्यूमन लाइफ ह्यूमैनिटी को पहले रखो, बाकी सब प्रॉपर्टी और ये सब के झगड़े दूर रखना चाहिए. Yes. We both firmly believe in it. या But unfortunately हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. या हम लोग दो लोग हैं. Yes. बहुत सारे लोग को पैसा, लैंड और वो सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. सो वीडियो क्रेजी कलर्स. Yeah. But I wanted to say something before I forget. जो विलेज था सबसे पहले जिधर वो लोग गए, देयर शी मेंशन कि वो लोगों को काफ़ी ईयर्स में उनके पास कोई थीफ नहीं था. Similarly, we have one place here also. महाराष्ट्र. Yeah. शिरडी. There people don't even have doors. या डोर्स नहीं है क्योंकि पीपल इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि कुछ नहीं होगा. Because वो एक भगवान का प्लेस है, it is a religious place. तो क्या होता है, they have this tremendous faith and it works. या somehow works. मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता हमारे एरिया में ऐसा कुछ विदाउट डोर्स. मैं तो कंफर्टेबल तक फील नहीं करेगा. हाउस को डोर नहीं होना है सच अ बिग थिंग. मैं अपना रूम तक कभी डोर खुला नहीं रख सकती. आई डोंट नो, आई फील वेरी अनकंफर्टेबल विद इट. या हम लोग शूटिंग करने के लिए भी जहाँ आते हैं वहाँ पर ये This जो door, डोर है इट इज क्लोज्ड. या इधर कोई नहीं है. मैं प्रेफर करता हूँ कि डोर ओपन रहे ये वाला रूम का, बट शी प्रेफर्स कि पूरा बंद ही रखा जाए. तो ये ऐसे लोकेशन में कभी नहीं रह पाएगी. बट मुझे नींद ही नहीं आ सकती है. या और या कलर्स मतलब वो एप्रिकॉट ट्रीज था क्या था. बट दोस फ्लावर्स दे वर क्रेजी. और मुझे फ्लावर्स इतने पसंद है, इतने पसंद है कि आई वुड जस्ट स्लीप इन सच प्लेस. मतलब बहुत ही सेटिस्फाइड रहेगी ना. एंड चाय वो दूसरा मेरा लाइफ का सबसे फेवरेट चीज़ है. और वो सिटिंग एरिया था ना, चेयर सब रखा हुआ था एंडिंग वीडियो के एंडिंग के टाइम में. दैट वाज सो ब्यूटीफुल. बाप रे. आई मीन अगर कोई क्रिश्चियन वेडिंग करना चाहता है ना तो उसके लिए आइडिया. यस, क्योंकि उनका थीम सब इससे बहुत मैच होता है. सो एंड ऐसा टाइप का लोकेशन वर्ल्ड में बहुत कम मिलेगा. अगर मिलेगा तो भी मतलब सीरियसली ट्रैवललाइट भी बोल रही थी उसका, और रियल नाम मैं भूल चुका हूँ. मतलब पता था, मतलब हमने ईमेल के थ्रू परमिशन मांगते वक्त पता था मुझे, लेकिन भूल चुका हूँ. बट शी सेड ना कि जापान का याद दिलाता है जब चेरी ब्लॉसम्स फुल इसमें ब्लूम में होता है. मुझे भी उसका जापान का याद दिलाया. एंड
या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का याद दिलाया. मतलब सीरियसली ऐसे लोकेशंस हमें यूजुअली सिर्फ इसने बोला कैलेंडर में देखने हाँ. मिलता है. कैलेंडर में जब वो ब्यूटीफुल लोकेशन सब बैकग्राउंड में होता है. आई एम श्योर कि बहुत सारे कैलेंडर के फोटोज पाकिस्तान से लिए हुए हैं. वेल हम लोग ने एक मूवी देखा है सलमान खान का, उसमें इन्होंने भी देखा रहेगा क्योंकि Yes. पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा हिट था. यस बजरंगी भाईजान. सो उसमें वो रेफरेंस भी था, एक कैलेंडर का फोटो देखकर Yeah. वो लड़की बताती है. या इट वाज वेरी इररिलेवेंट, लेकिन मुझे याद आया. या और अब मुझे एक और चीज़ समझा कि कैलेंडर में जो फोटोज रहते हैं ना वो सीजन वाइज होते हैं. यस ऑब्वियसली वो मैंने पहले ही रियलाइज किया था. मुझे अब भी समझा. बट ग्रेट Yeah. वीडियो बाय ट्रैवलाइट. मतलब ये डेफिनेटली लास्ट वीडियो से भी बहुत अच्छा था. मतलब लास्ट वीडियो अच्छा था बट दिस वाज अमेजिंग. यस मतलब लोकेशन करेक्ट. आई थिंक लोकेशन प्लेड अ ह्यूज पार्ट एंड ऑल्सो आई थिंक नाउ शी हैज ड्रोन. लास्ट टाइम नहीं था. मतलब लास्ट वीडियो में, या फिर शी डिड नॉट यूज इट, आई डोंट नो. पॉसिबल. बट इस बार उससे और भी मज़ा आ गया. दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस अभी रिसेंट Yes. टाइम्स में. सो ग्रेट जॉब. अगर आपको सपोर्ट करना है ट्रैवलाइट को तो ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में. बस क्लिक करो, उनके वीडियो पे जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट हर बिकॉज बहुत मेहनत ली है. दिस वाज 7th एपिसोड, सो आई थिंक यू हैव 6 more videos which you can watch. या और दो भी आ चुके हैं. आई थिंक वो पाकिस्तान से जा चुकी है. ओके. एंड मैंने कमेंट्स या किसी ने ईमेल किया था आई थिंक कि 9 एपिसोड्स आई थिंक. एंड रॉन्ग हो सकता हूँ. ईमेल या कमेंट में देखा था कि 9 एपिसोड्स है और सीरीज एंड हो चुका है. Okay, मतलब so recently एंड हुआ. you have more than 6 episodes to watch, so Yeah. definitely subscribe to her channel और देखो. या सो will दैट्स see इट you फॉर next दिस time. वीडियो. विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.